After a well-fought win over Australia to get things started, India play Afghanistan in Delhi today. With the spotlight will surely be on Virat Kohli for obvious reasons. It's like Ghar-Vapsi in a way for the king, right? India will surely not take Afghanistan lightly in this match, knowing that they have defeated Bangladesh at home, something that India has failed to do on the last two occasions. So surely we cannot take them lightly. In this session on India.com, we'll discuss the team combinations, permutations, and playing conditions. And to do that, we have with us Biswajit Jha, who's an ex-sports editor and an author. We have Utkarsh, we have Akshat, we have Kaushik, we have Sunny, we have Ashutosh. We'll also be having Kapil Vashish join us from Ground Zero. He's actually driving and going to the Arun Jaitley Stadium right now. In some time, he's going to join us. So without wasting any time, I'll get started with you, Biswajit. It's a big occasion, right, Biswajit? Virat Kohli comes back home after conquering the world. How's the feeling like? How's the feeling as a cricketer? What would he be feeling like? Overwhelmed? Because wherever he goes, I'm sure he's getting all the attention, right? Yeah, but I don't think he will be bothered about that because it has been quite a long time he has been playing cricket and he has played in Delhi. It's not for the first time that he is playing in Delhi. He has played a lot. A stand is named after Virat Kohli, and he said that it is little bit awkward for him to see the stand named after him because it is the ground where he practiced a lot when he was not a India star. So it's a kind of an emotional moment for anyone who plays in his hometown. But I don't think Virat Kohli will be bothered about that because he has seen it all. He has done it all. He has actually after playing more than 10, 12 years, he has seen everything basically. So now I don't think these little things excite him that much and bother him that much. So I think he will be concentrating on the match, and he will be eager to win the World Cup for India for the second time after 2011. So I don't think homecoming doesn't bother him that much. Biswajit, is looking at the schedule, and India played the first match against Australia. We won the match. It was a well-fought win, not a win on a canter, right? And then in a week's time, over the weekend again, it's going to be a high emotional match when India take on arch rivals Pakistan. And today there is a match which is sandwiched between the Australia match and the Pakistan match. India take on Afghanistan. Don't you think the scheduling has been perfect? And this Afghanistan match will give Rohit Sharma, Shreyas Iyer, and Ishan Kishan the time to get among the runs, get some confidence in their game heading into the big game over the weekend. What do you have to say to that, Biswajit? And then I come Yeah, yeah. across. After the Australia match, it was a hard fought match. So it's good that India is taking on a relatively weaker opponent, but Afghanistan's bowling attack is good. But I don't think they match India in every department. So it's good that between the two high octane matches, this Afghanistan match is scheduled. I think this schedule is perfect for India. And I think that this is a chance. This match gives a chance to Rohit Sharma, Ishan Kishan, or Shreyas Iyer, who didn't perform well against Australia. So I think it's a perfect scenario for India. Everything for India actually till now everything is in their favor. So if I am again saying the same thing yesterday, which I told yesterday, that for the absence of Shubman Gill can be a blessing in disguise also because if you there is a concept of law of average. So if someone plays very well throughout the tournament, because at the end of the day you can lose a match or two in the league stage, but in semi-final and final these 2 days you can't lose and you can't falter. So these 2 days are very important. The team which will play well on those 2 days, semi-final and final, they will go to win this tournament. It doesn't matter a team wins all the matches in the league stage and then doesn't play well in semi-final. And So that is it's something better that to happened with the Indian team in the 2019 World Cup and also the yeah, yeah. 2015 World Cup, where we won all the matches and then
come the semi-final, we lose. Uh, Right? We were I hope. in one of the Yeah, yeah. semi-finals, we were outplayed 2015. I vividly remember that. I'll come to you, Kaushik. Kaushik, this Afghanistan team cannot be taken very lightly. And I also have a hunch, Kaushik, that Noor Ahmed probably would be incorporated. He could probably get in the 11 today. That will also strengthen their spinning, their spinning battery in that manner. Uh, and this Afghanistan has also defeated Bangladesh at home twice, something that India has failed to do on their last two trips to Bangladesh. So, one thing for sure, this Afghanistan team knows the conditions well, unlike last time when they were playing in England or in Australia. This is one team that surely cannot be taken lightly, Kaushik. What do you have to say about that? Who are the players from Afghanistan to keep an eye on, to watch out for? Kaushik. So basically, yes, as you rightly said that not only just Afghanistan. I mean, whoever is playing, just because they are low in the rankings, you can't Right, take them lightly. I mean, these teams right. are playing in the World Cup, and they surely have some merit. That's why they are playing in the World Cup. So not just Afghanistan. We cannot take any team lightly in this World Cup. Let's Number two, as you specifically talk just said, about the Afghanistan Afghanistan knows team Indian because they are conditions playing very well. Afghanistan I today, mean, you Kaushik. see, yes, 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 yes. So basically, this Afghanistan team knows Indian conditions very well. As you know, they used to practice in India before, and some of the players are also a part of the IPL. And coming to the point that who are the players to watch out for in this Afghanistan team today, I think one player is for sure their opener Amanullah Gurbaz. He has been some in blazing form in 2023. So he will be the one player to watch out for. Number one, number two, Rashid Khan. We cannot miss this player. From any list. I mean, he can do wonders on a given day. So Rashid Khan is number two, second player for me. I think Mohammad Nabi and Mujibur Rahman would also be the players to watch out for from the Afghanistan team because the yes, But do you these think, players. Kaushik, I I've mean, got this counter question. Kaushik, I've got this counter question. Do you think the Arun Jaitley track is going to assist spinners? Because I feel it's not going to assist spinners. And it's going to be the same. spinners who are going to walk the talk. Same for me. Same for me. This, because we have seen in the South Africa versus Sri Lanka game how the South African batters piled 400 plus runs on this very wicket. So yes, these spinners, yes, spinners will also play a big part in this World Cup on Indian conditions mostly. But on this Delhi wicket, I think more than the Afghanistan spinners, I think the Indian spinners hold the edge because if you see Ravichandran Ashwin or Kuldeep Yadav or Jadeja, they have proven costly to the opposition on a flat track also before. So I think more than Noor Ahmed or Mujibur Rahman or Mohammad Nabi or Rashid Khan, I think the Indian spinners will rule on this wicket. Yes, Yeah. it I was going to ask you this. Okay, fine. Let's just introduce. We have Kapil Vashist who's joining us on this show, this session right now. Kapil Vashist is actually driving to the ground. He's going to the venue to cover the India versus Afghanistan match. He has been also traveling with the Indian cricket team from Chennai to Delhi, and now next up he'll also be going to Ahmedabad. So he has all the know-how of the Indian cricket team. Kapil, I want to find out. I had this question and I thought I'll ask this a little later. लेकिन मुझे आपसे पूछना ही पड़ेगा शुभमान गिल का सिनेरियो क्या है? शुभमान गिल अब भी सुबह-सुबह खबर आया शायद वो बांग्लादेश के साथ जो मैच है वो भी शायद मिस कर सकते हैं. And there was also a report on the Indian Express yesterday जहां पर बोला गया यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ could be contemplated. ये पूरा बात में कितना सच है? आपके पास कितना इंफॉर्मेशन है? Can you please share it with our fans joining us at this point of time? Kapil, please over to you. Yes, good morning everyone. शुभमन गिल अभी खबर ये है कि ही इज ट्रेवलिंग टू अहमदाबाद नाउ और अभी भी उनको रेस्ट की जरूरत है और अभी वो पाकिस्तान वाला गेम तो मिस करेंगे ही और जैसा कि आपने कहा पुणे वाला गेम भी अभी नॉट श्योर बिकॉज हम सब जानते हैं डेंगू के बाद बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है किस तरह से स्लोली रिकवर करती है डिहाइड्रेट भी आप होते हो उसमें तो पूरा कंप्लीट फिटनेस के लिए मुझे लगता है अभी 10 दिन कम से कम और चाहिए होंगे तो फिंगर्स क्रॉस्ड हम उम्मीद कर रहे हैं कि
जल्दी से जल्दी 19-20 तारीख तक फिट हो जाए, ताकि हम 22 तारीख को उनको धर्मशाला में देख सके। कपिल, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, ये जो ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल का बातचीत चल रहा है एज बैकअप ऑप्शंस, इसमें कितना सच्चाई है और आपको कितना पता है? यस। देखिए, अभी टीम मैनेजमेंट ने ऐसी सेलेक्टर से कोई बात नहीं हुई है कि हमको एक बैकअप ओपनर के लिए चाहिए। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई उन दोनों में से जो आपने नाम लिए, ऋतुराज और यशस्वी, उनमें से कोई टीम को अभी ज्वाइन करेगा। Right. Okay, fine. Let's just ask Kapil. I want to ask you one more question. I know you're driving, and I don't want to I don't want to get you disturbed and all that. But ऐसा क्या हो सकता है? हमें पता है कि कोटला का जो विकेट है वो ज्यादा स्पिन को असिस्ट नहीं करेगा। क्या हम शार्दुल ठाकुर को आज 11 में देख सकते हैं इन प्लेस ऑफ रविचंद्रन अश्विन? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम अपनी 11 को बदलने वाली है। हम वैसे कहते भी हैं, यू डोंट चेंज अ विनिंग कॉम्बिनेशन, और वैसे भी मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है बदलने की। कोटला का सरफेस आपको याद होगा अंकित, 3-3.5 साल पहले रीलेड किया गया था। तो अब वो उतना जैसे कोटला पे जाना जाता था, एकदम नीचे रहता था, स्लो रहता था, ये वैसा विकेट अब नहीं है। तो यू कैन हिट थ्रू द लाइन, यू नो। तो ये अच्छा विकेट है अभी बैटिंग के लिए। और जो भी कप्तान टॉस जीतेगा, अगर पहले बैटिंग करने का फैसला करता है, तो मुझे लगता है कि अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए। वो वाला विकेट पे मैच नहीं हो रहा है जिसपे साउथ अफ्रीका और श्रीलंका खेले थे, जहां 750 रन एक दिन में बन गए थे। लेकिन ये उसके लेफ्ट में ये विकेट है जहां पे मैच हो रहा है। सॉरी, ऑन टू द राइट दिस इज द विकेट। और ये भी अच्छा विकेट है बैटिंग के लिए। तो मुझे लगता है अनदर रन फीस कमिंग अप, 350 340 बनना चाहिए जो भी पहले बैटिंग करेगा। इंडिया बैटिंग करेगा। अफगानिस्तान के कप्तान ने कल कहा कि हम जानते हैं कि हमारे पास गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन हमको रन बोर्ड पर लगाकर देने होंगे। तो मुझे लगता है अच्छा बैटिंग विकेट है, छोटा ग्राउंड है, हम सब जानते हैं। और जहां तक आपने 11 में बदलाव की बात की, आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी एनी चेंज इन 11। द सेम 11 इज गोइंग टू प्ले दैट वन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कपिल, और एक चीज मुझे आपसे पूछना है कि ये देखिए, वर्ल्ड कप में ना लोग बोल रहे हैं ज्यादा बज नहीं है। पहला मैच भी वी सॉ द 2019 फाइनलिस्ट्स प्ले द ओपनर ऑफ द वर्ल्ड कप, देयर वाज एम्प्टी स्टैंड्स, एंड सो व्हाट इज इट लाइक, व्हाई इज दिस हैपनिंग इन इंडिया? तो हम उम्मीद करते हैं कि पैक्ड स्टेडियम्स होंगे। इनफैक्ट आईपीएल मैचेस में भी वी गेट टू सी पैक्ड स्टेडियम्स, लेकिन अब ऐसा बात क्यों नहीं है? व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, कारण मैं आपको बताऊं, एक है इसका, टिकटिंग में जिस तरह का गूफअप हुआ है। गूफअप से मेरा मतलब ये है कि इस देश में ये ठीक है कि ऑनलाइन हम सब्जी भी खरीदते हैं, फल भी खरीदते हैं, पेमेंट भी करते हैं, रिचार्ज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज भी स्टेडियम के पास अगर आपने काउंटर बनाएंगे टिकट खरीदने के लिए, तो वहां पे आपको लाइन दिखाई दे जाएगी। तो आपको एक बफर टिकट का स्टेडियम के पास काउंटर हर जगह आपको बनाकर रखने चाहिए थे। वहां पर लोग आते हैं, जो लेमैन है, जो नहीं जानता है ऑनलाइन खरीदना, उसको वहीं से खरीदने का पता है। तो आपने ट्रांसपेरेंसी के नाम पे ये तो कर दिया कि चलो ऑनलाइन हो गया, लेकिन ऑनलाइन में भी टिकट कहाँ मिल रही है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। जब एक बार बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का मैच का टिकट सोल्ड आउट हो गया, तो कैसे 3 दिन पहले ये राइट समझ राइट से राइट परे है। ये इसमें तो ये मेरे लिहाज से ये फेयर प्ले नहीं था। Right. So, yes, see, we have got a lot of panelists over here. Anybody who has a question, please raise your hand. We'll come to you. I get a lot of complaints that मैं बात करने का मौका नहीं देता हूँ. सो So I don't want that. किसी को भी कुछ बोलना है, please raise your hand. I'll come to you. Sunny, I'll ask you, क्या आपको लगता है ये change हो सकता है? कपिल कह रहे हैं कि he does not see a change in the Indian playing 11. क्या आपको लगता है? Because मुझे तो लगता है ये change हो ही सकता है. Ashwin wasn't the very best. He wasn't getting the ball But to spin on a spinning track in Chennai. So do you actually see a change in the Indian 11 today, Sunny? अंकित, आपको क्या 11 लगता के है? अंदर कोई चेंजेस 11 के अंदर कोई चेंजेस नहीं होने वाले। और अगर आप अश्विन को चेंज करने की बात कर रहे हो, इससे पहले दिल्ली ने ना ऑस्ट्रेलिया को फेस करा था फिरोज शाह कोटला के अंदर, तो वहां पे अश्विन ने अच्छा खासा परफॉर्म करा था, ऑल्दो इट वाज अ टेस्ट मैच। बट अगर अब आप चेंजेस करोगे, दिल्ली की पिच पूरी बैटिंग पिच है, और शार्दुल ठाकुर अगर एक बार पिटाई पे आ गए बैट्समैन, क्योंकि अगर आप देखोगे अफगानिस्तान की जो टीम है T20I के, उनके जो बैटर्स हैं वो T20I स्पेशलिस्ट हैं। एक बार उन्होंने मारना स्टार्ट करा, तो फिर उसके बाद आपको पता है शार्दुल ठाकुर का क्या होता है। तो शार्दुल ठाकुर विकेट ले लेते हैं, शार्दुल ठाकुर पिटते हैं। उन्होंने खुद भी बोला है, वंस ही वाज टॉकिंग टू अ रिपोर्टर, कि मैं एक बार अपने हाथ से बॉल छोड़ता हूँ, मुझे नहीं पता बॉल लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, सीधी जाएगी, कहाँ जाएगी। तो शार्दुल ठाकुर का ऐसा, अश्विन पूरा एकदम अपना गेम लेके चलते हैं, तो अश्विन को चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता।
और दूसरी बात जो आप You बता रहे know, हो कि इसकी right, right. शुभमान गिल वाली जो बात अभी आपने कपिल से करी कि उसकी जगह यशस्वी जायसवाल और उसकी जगह शिखर धवन भी आ सकते हैं, हो सकता है उसकी जगह शिखर धवन आ जाए, तिलक वर्मा इज ऑल्सो देयर, अगर चेंज करना ही है तो। Another change I think could happen is, Mohammad Shami has a fantastic record at this venue. He had picked up a hat trick 4 years ago over here. तो उत्कर्ष क्या आपको लगता है that also could be an option? Give a little bit of rest to Shiraj, workload management आ जाता है, and Shami is more or less like for like. What Shami also brings to the table is experience. क्या ये ऑप्शन को contemplate किया जा सकता है उत्कर्ष? What do you have to say? Anybody wants to speak on this topic? Please raise your hand and speak. You are more than welcome to do it. Utkarsh, please. सी आई डोंट थिंक सो कि मतलब हमें कोई चेंजेस करना चाहिए। अगर हमारे पास विनिंग कॉम्बिनेशन है तो हमें उसी से ही स्टिक करना चाहिए कि हमें फर्दर मैचेस में भी उसका बेनिफिट हो। हम एक मैच जीते ठीक है, हम फिर रेस्ट करते, शमी को खिला लेते, देन नेक्स्ट मैच में हम फिर अश्विन को खिलाते। जो उनका जो गेम टाइम है तो वो भी उनको हैम्पर करेगा, उनको भी तो गेम टाइम मिलना चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड कप में अगर आप अभी भी स्विच कर, आपको अपना विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं पता है, तो फिर ये आपके लिए जो लेटर स्टेजेस होंगे, जब आपके लिए जब सेमीफाइनल होगा, फाइनल होगा, वहां पे आपको बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आप वहां पे मैच हार सकते हो क्योंकि आपको कंफ्यूजन रहेगी कि हम किसे खिलाए किसे नहीं खिलाए। आई विल से कि ठीक है, शमी का रिकॉर्ड अच्छा, उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी अफगानिस्तान के खिलाफ, बट वाई टू चेंज? अगर अश्विन ने चेन्नई में मतलब विकेट्स नहीं ली थी, बट उनने वहां पे रन कंसीड भी नहीं करा था, उनने वहां पे रन स्टॉप करे थे, उसी का ही बेनिफिट जडेजा को हुआ, कुलदीप यादव को हुआ कि उनने वहां पे विकेट्स ली। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब हमें ये चेंजेस करना चाहिए। Akshat, let us look at this combination. Fine. Why not play three frontline seamers? Why not play Shami, Siraj, and Bumrah at Delhi? ये option कैसा रहेगा Akshat? What do you have to say to that? Because you also covered in the spin department with Kuldeep Jadeja, and there is an extra medium pacer in Hardik Pandya. तो तीन सीमर्स खिला ही सकते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, एक्सपेरिमेंट कर ही लो. Could that be an option, Akshat? अंकित, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सी, मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट आई थिंक इज नाउ एज पर एवरीवन हैज टोल्ड दैट यस, इंडिया हैज वॉन द मैच एंड यस द विनिंग, इंडिया की जो विनिंग टीम उस टाइम जो 11 थी वही एक्चुअली प्लेइंग 11 भी होनी चाहिए इस मैच के लिए भी। यू नो समटाइम्स प्लेयर्स, इफ प्लेयर्स गेट सम टाइम इन बिटवीन, एज यू सेड दैट मोहम्मद मोहम्मद सिराज को रेस्ट देके मोहम्मद शमी को एक बार लेके आए 11 में, एज यू सेड, it's not going to change like that. I mean, India can try that. Why? Because India has tried that before also. Why? Because आगे clash भी होने वाला है अपने जो आर्क राइवल्स हैं उनके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो मोहम्मद शमी को हो सकता है चांस दे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चांस देंगे। दे वुड बी गोइंग विद दिस टीम। ऑन द अदर हैंड, आई थिंक सो श्रेयस अय्यर, I'm gonna take a pick on Shreyas Iyer. He's gonna perform today very well. Why? Because Shreyas Iyer has always been like that. I mean, before in the matches also, we have seen Shreyas Iyer. If he has failed in the between in the one match, on the other match, he has always performed. He has always performed according to his records. If he failed in one match, he's gonna perform in other match. I'm gonna pick him because Shreyas Iyer has that experience and he can play in the middle order. And as we know, Afghanistan, as we talk about Afghanistan's team, as Sunny told us that it's a T20, a specialist team, we should not take them lightly. Literally, we should not take them lightly because they have experience and they can hit the ball very well, as they have experienced players like Rashid Khan and Mujib Nabi. They have performed very well, and having IPL experience and having playing in Firozshah Kotla, they have played before. So I think so that this is going to be a very good match and great match. That's all I would tell, and there would be no changes in the 11. I think so. If there would be a change, then I think so. Mohammad Shami can come in instead of Mohammad Siraj, but I don't think so that that's gonna change. If it's gonna be changed, then Mohammad Shami could come in. राइट आशुतोष, आई एम सॉरी आपको इतना देर वेट करना पड़ा। आज का मैच में और एक चीज काफी रोमांचक रहेगा आशुतोष, पता है क्या है वो चीज? आज नवीन उल हक और विराट कोहली आमने सामने होंगे, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्पाइस ओवर देयर। आशुतोष, क्या आपको लगता है आज भी कुछ चैटर बैंटर हो सकता है?
दोनों के ऑफ बीच में कोर्स कोहली शायद विराट का कुछ दिखावा करना चाहे अपने घर में आके इसको, क्या लगता है? ऐसा ऑफ कोर्स विराट का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि मेरा आपको विलियम्स याद हो गया वेस्ट इंडीज के स्टार्क के अगेंस्ट जिस तरीके से पिचिंग, इवन मैक्सवेल को जैसे उन्होंने प्रोवोक Yes. किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप विराट को अगर देंगे तो आपको रिटर्न में मिलेगा। उस मैच में आपको नहीं मिला, आप बच गए, शायद गंभीर के आपको शील्ड की तरह यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको उस तरीके से। अब आपको एक्चुअल में वो हॉस्टाइल क्राउड जिसकी हम बात तो क्या करते हैं ये ना, शायद आपको झुंडा दिल्ली टच में नवीन करेगा कोहली के घर में ऑफ घुस के? कोर्स ऑफ कोर्स आप अगर देखिए इसके पहले अफगानिस्तान के मैच के अगेंस्ट भी जो क्राउड ने बहुत प्रोवोक किया था कोहली के नाम से। अब तो आप कोहली के होम ग्राउंड में है, आपको पता है कितना हॉस्टाइल क्राउड होगा अगेंस्ट एक्चुअल में नवाज के, कि आपको हर बार जो है बार बार आपको सिर्फ जो है विराट ही सुनाई देने को मिलेगा जब जो बॉलिंग करेंगे। और ट्रस्ट मी विराट एक्चुअल में आज गिव इट टू बैक वाला होगा कि अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा ना, शेर शिकार करने पे आता है तो क्या होता है। आप उसी से सीख रहे हो जो स्लेजिंग ही करता है पूरे टाइम, तो आपको पता चलेगा रिटर्न में क्या मिलता है। राइट, तो ऑफ कोर्स ये तो होने ही वाला है। राइट. विशुजी So सर वांट टू से we've more समथिंग। or less got a fair idea as to आज मैच से क्या right. ये नवील ये नवील ये जो है नवील, इनको ज्यादा भाव देने का मतलब नहीं है। Biswajit, can you please go on mute over here? ये जो नवील So है as ना, we got a fair idea as to what to expect from the match today between India and Afghanistan in Delhi. We also got to understand that Shubman Gill won't be participating in this match, and that's going to be a major setback for India. And Kapil also gave us a fair idea as to what the conditions would be at the Arun Jaitley Stadium today. Thank you so much for joining me in this session on India.com. Stay tuned to this website for all the latest across sports. Our focus would surely be the ODI World Cup. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। थैंक यू।